अभी अपडेट कैसे हो रहा है मैं इसका आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो जिनका प्रॉब्लम आ रही थी उसमें क्या होता है, ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा था, तो उससे क्या मैं डिवाइस मुझे मतलब एक हंग स्टेट में चला गया। तो फर्स्ट आई वाज लुकिंग एट हाउ टू रीबूट योर डिवाइस। वेलकम बैक गाइस। एक्चुअली मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम एक्सपीरियंस जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ, और मुझे लग रहा है कि जब मेरे साथ ये इशू हो रहा था द फर्मवेयर अपग्रेड फॉर C50, मैंने गूगल किया, मुझे इतने सॉल्यूशंस नहीं मिले। ओके, देन आई एंडेड अप रीचिंग आउट टू Bluarmor Support Team. They are very cooperative. So I think Rohit from their team, he reached out to me, he explained me the process, and what I want to do was, like, before I go and try it and just share the experience, I want to do it in front of you guys so that at least we know, we can like, you can also see like what happened, then what you can do, and then okay, what will help you to achieve the end goal. The thing is, when this was launched, the time it was launched until today, there are a lot of firmware upgrades are happening. As I told you in the past, Bluarmor अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, चाहे वो डिवाइस का हो या आप ऐप का हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारे बग फिक्सेस रिलीज हो रहे हैं, राइट। तो जो मेरे पास आया है, तो व्हाट हैपन वाज, जब मैं इसको अपडेट कर रहा था, फर्मवेयर अपग्रेड तो कनेक्ट हो रहा था, बट फर्मवेयर अपग्रेड के टाइम पर ये इनिशियलाइजेशन फेज पे अटक रहा था। So I tried twice, then it stopped even starting. So then they shared me few hacks. So I want to share with that hack also with you. So you can see that it's okay. Sorry, I'll move it like this so that at least आपको सही दिखे। जिसका डॉक है, ना डॉक, जो हमारा डिवाइस है, राइट। मैं ऐप ओपन करता हूँ, ये मेरी ऐप है, if it's visible it's good, right? And what I'm going to do is I'm going to just put this in, connect it, okay? और अब पेड है, ये पहले मतलब ये एक्टिव हो गया, ये कनेक्ट हो गया, okay? I can see it's showing a red button, a red swap, so that is for the firmware upgrade. I don't know if it's visible to you guys or not, but yeah, okay? So अब क्या हो रहा है, when I'm trying to upgrade it, so what you do is you just do like this, ये अभी restart होगा और ये डिस्कनेक्ट हुआ। अब इसके बाद से इनिशियलाइजेशन फेस में चला जाना चाहिए, ओके, है ना। ये इनिशियलाइज होके स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने अपना C30 जो है उसका भी किया, और यू कैन सी ये लाइट ब्लिंक करती है। मैंने ट्राई टू कनेक्ट directly with the device to get the firmware upgrade done. Okay, so it's blinking, so that's a good thing. In the meantime, when it's getting initialized, so it is getting updated 64%. जैसे अपडेट हो जाएगा, then we will, I'll tell you हुआ क्या था। So when I purchased, it came with firmware 1, version 1, और जब मैं इसको लिया, जब इसको कनेक्ट कर रहा था, I was getting it initialized. So after checking with Bluarmor team, so they told me that जो current version है वो version 4 for the firmware. So जैसे हमारे एप्पल फोन में भी होता है, राइट, कि आपका जब 2-3 लेवल अप आ जाता है तो आपको बीच के जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो फिक्स करनी, मतलब वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। या तो बंडल पूरा लो जिसमें सारी डिपेंडेंसीज हो, या फिर जो कंपनी करती है, कंपनी बग फिक्सेस या वर्जन मॉड्यूल्स शेयर करती थी, तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जो पुराने से हट जाती हैं, और उस वजह से ये 1 to 4 डायरेक्ट जंप नहीं कर पा रहा था। तो हमने फिर आई कनेक्टेड विद Bluarmor टीम, उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर किया जिसके अंदर देयर वाज अ टेस्ट फ्लाइट ऐप, ओके, जिससे उन्होंने कहा कि व्हेन यू डू द अपग्रेड इट विल वर्क फॉर यू। सो ओके, इट्स अपडेटिंग, so I'll just show you what was there. It's getting updated, right? Perfect. So this was Rohit from Bluarmor. So they shared me with this link. This is testflight.apple me with this link. मैं लिंक अपने उसमें शेयर कर दूंगा. So where it takes you to a browser where you can get test flight. So that's it helps developer test beta version for their app
because I think what they have noticed that this whole issue of updating the firmware is happening with respect to Apple product. Like if I was like I'm using the iPhone, right? So I was trying to upgrade the firmware from iPhone. So that's why they share this. I'm not sure like it is happening with Android or not, but you guys can share if it's happening with Android also. So you can go there, okay? So you need to go view and you need to install this test flight. Okay, and once that is installed, then okay, view Bluarmor beta. Okay, so view in test flight. So once it's installed, you can view this in Bluarmor, which enhance your riding experience. So I think let's see. I'm not allowing it. Continue. So now it installed. तो आपको ये देता है कि आप Bluarmor की एक टेस्टिंग ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो. So you can install this app directly. Okay. आई थिंक ये अपग्रेड हो गया है. इनिशियलाइज हो रहा है अभी. कूल. आई थिंक इन्होंने अपग्रेड कर दिया. रिस्टार्ट हुआ है और फिर से कनेक्ट हो रहा है. लेट्स सी. ओके, आई थिंक अपग्रेड हो गया. Let me help you. So for example, this is hung state, and I want to restart it, and this device, this particular thing is connected to your helmet. Now what you can do is you can just all the three buttons. There's one button, two button, three button. So you just press it. Ten times. After 10 seconds, it had a hard reboot. So this is the way you can do a hard reboot of your device. Okay. Thank you guys. Have a good day.